हेलो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट की हमने जो एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है, इस एमसीक्यू की सीरीज के लेक्चर नंबर 6 में हम जिस टॉपिक की एमसीक्यू देखने वाले हैं वो है टॉपिक नंबर 5, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। तो इस टॉपिक के जो है टोटल 25 प्लस एमसीक्यू इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के जो 5 लेक्चर्स हैं वो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वो आप जरूर देखें। और ये स्ट्रक्चरल मॉडलिंग में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी यूएमएल डायग्राम्स आती है। तो इसमें जो है क्लास डायग्राम और ऑब्जेक्ट डायग्राम आती है। तो इस दो डायग्राम पर बेस जो एमसीक्यू है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड इन अ स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। तो इसके ऑप्शन ए द स्ट्रक्चर ऑफ सर्किट, ऑप्शन बी behavior of the circuit on a different input, option C data flow from the input to output, and option D functional structure। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए द स्ट्रक्चर ऑफ सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। तो इसके ऑप्शन ए प्रोसेस, ऑप्शन बी कंपोनेंट डिक्लेरेशन, ऑप्शन सी कंपोनेंट इंस्टेंशिएशन, एंड ऑप्शन डी ब्लॉक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कंपोनेंट इंस्टेंशिएशन। कंपोनेंट इंस्टेंशिएशन इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू द एंटिटी डिक्लेरेशन इन स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। तो इसके ऑप्शन ए कंपोनेंट इंस्टेंशिएशन, ऑप्शन बी कंपोनेंट डिक्लेरेशन, ऑप्शन सी पोर्ट मैप, एंड ऑप्शन डी जेनेरिक मैप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कंपोनेंट डिक्लेरेशन। कंपोनेंट डिक्लेरेशन इज सिमिलर टू द एंटिटी डिक्लेरेशन इन अ स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कंपोनेंट इंस्टेंशिएशन। तो इसके ऑप्शन ए टू यूज द कंपोनेंट, ऑप्शन बी टू डिस्क्राइब एक्सटर्नल इंटरफेस ऑफ द कंपोनेंट, ऑप्शन सी टू डिक्लेयर द गेट लेवल कंपोनेंट, and option D to remove any component from the design। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए टू यूज द कंपोनेंट। कंपोनेंट इंस्टेंशिएशन मींस द यूज ऑफ द कंपोनेंट इन द सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चरल मॉडल इज सिमिलर टू डैश डैश। तो इसके ऑप्शन ए बुलियन रिलेशन ऑफ द सर्किट, ऑप्शन बी स्केमेटिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ द सर्किट, ऑप्शन सी टाइमिंग रिलेशन ऑफ द सर्किट, एंड ऑप्शन डी कंपोनेंट ऑफ द सर्किट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्केमेटिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ द सर्किट। स्ट्रक्चरल मॉडल इज सिमिलर टू द स्केमेटिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ द सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग हेल्प्स टू फाइंड द डैश डैश ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसके ऑप्शन ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, ऑप्शन बी बाउंड्रीज, ऑप्शन सी स्कोप, एंड ऑप्शन डी रिक्वायरमेंट्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। स्ट्रक्चरल मॉडलिंग हेल्प्स टू फाइंड द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग इज नीडेड टू सपोर्ट अ सिस्टम्स। तो इसके ऑप्शन ए स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी बिहेवियर, ऑप्शन सी एक्सपांशन, एंड ऑप्शन डी बाउंड्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिहेवियर। स्ट्रक्चरल मॉडलिंग इज नीडेड टू सपोर्ट अ सिस्टम्स बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्लेक्सिबल एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम नीड्स डैश डैश दैट सेटिस्फाई द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। तो इसके ऑप्शन ए प्रोग्रामर्स, ऑप्शन बी एनालिस्ट, ऑप्शन सी बिल्डिंग ब्लॉक, एंड ऑप्शन डी रिसोर्सेस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बिल्डिंग ब्लॉक्स। अ फ्लेक्सिबल एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम नीड्स building blocks that satisfy the specific requirement of the structural modeling। Please like the video and subscribe the channel Code Learning for more MCQ videos। Next question है, which of the following may be the aim of structural modeling। इसके ऑप्शन ए अंडरस्टैंडिंग एन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी बिल्डिंग एन एंटायरली न्यू स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, एंड ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एनी ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ वर्चुअल वर्ल्ड ऑफ सॉफ्टवेयर अ क्लास इज अ डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिप्रेजेंटेटिव, ऑप्शन बी अ टेम्पलेट, ऑप्शन सी एन एब्स्ट्रैक्शन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एन एब्स्ट्रैक्शन। इन वर्चुअल वर्ल्ड ऑफ सॉफ्टवेयर अ क्लास इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the virtual world of software a class is dash to create an object। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए a template, ऑप्शन बी an exist, ऑप्शन सी the reason एंड ऑप्शन डी conceptualized। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए a template। in virtual world of software a class is a template to create an object। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a class is dash। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए an abstraction of object, ऑप्शन बी एन टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मॉडलिंग एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डैश दैट इट ऑफर्स टू द आउटसाइड वर्ल्ड। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एट्रीब्यूट्स, ऑप्शन बी सर्विसेज, ऑप्शन सी क्लासेस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सर्विसेज। द इंटरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सर्विसेज दैट इट ऑफर्स टू द आउटसाइड वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टैग्ड वैल्यू, ऑप्शन बी इंटरफेस, ऑप्शन सी क्लास एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्लास। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। हम जो है सबसे पहले क्लास बनाना पड़ता है तभी हम उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इस वजह से क्लास को जो है ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास इज रेंडर एज डैश। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सर्कल, ऑप्शन बी स्क्वायर, ऑप्शन सी रेक्टेंगल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रेक्टेंगल। क्लास इज रेंडर्ड यानी कि ड्रॉ किया जाता है एज अ rectangle। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRC stands for dash। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपोनेंट, ऑप्शन बी क्लास रिलेशन कोलैबोरेशन, ऑप्शन सी कोलैबोरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपोनेंट एंड ऑप्शन डी क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेशन। CRC stands for क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडलिंग सिंपल कोलैबोरेशन डैश डायग्राम। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी क्लास, ऑप्शन सी एक्टिविटी एंड ऑप्शन डी यूज केस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्लास। मॉडलिंग सिंपल कोलैबोरेशन क्लास डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज द कनेक्शन अमंग द थिंग्स। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्लास, ऑप्शन बी रिलेशनशिप, ऑप्शन सी स्टेरियोटाइप एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रिलेशनशिप। अ रिलेशनशिप इज द कनेक्शन अमंग द थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिपेंडेंसी रिलेशनशिप इज रेंडर्ड एज डैश। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सॉलिड लाइन, ऑप्शन बी डैश लाइन विथ एरो, ऑप्शन सी सॉलिड लाइन विथ filled arrow and option D dashed line with filled arrow। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, dashed line with arrow। This symbol is used to represent dependency relationship। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a generalized relationship is rendered as a dash। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सॉलिड लाइन, ऑप्शन बी डैश लाइन विथ एरो, ऑप्शन सी solid line with filled arrow and option D dash line with filled arrow। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, solid line with filled arrow is represent the generalized relationship। यहाँ पर आपको जो है ऐसे ही अदर जो रिलेशनशिप है उसके भी सिंबल देखकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सभी जो नोटेशंस है वो आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन सा नोटेशन जो है किस टाइप की रिलेशनशिप डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है।
जैसे कि एसोसिएशन रिलेशनशिप के लिए जो है सॉलिड लाइन यूज की जाती है, डिपेंडेंसी रिलेशनशिप के लिए जो है डैश लाइन विथ एरो यूज किया जाता है, उसके बाद जो है जनरलाइज रिलेशनशिप के लिए सॉलिड लाइन विथ फील्ड एरो यूज किया जाता है। तो ये जो सारे सिंबल है आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट डायग्राम इज यूज्ड टू शो द डायरेक्ट डिजाइन व्यू ऑफ द सिस्टम। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्टैटिक, ऑप्शन बी डायनेमिक, ऑप्शन सी लॉजिकल एंड ऑप्शन डी प्रोसेस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्टैटिक। ऑब्जेक्ट डायग्राम इज यूज्ड टू शो द स्टैटिक डिजाइन व्यू ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट शोज अ सिमेंटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर क्लासेस। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डिपेंडेंसी, ऑप्शन बी जनरलाइजेशन, ऑप्शन सी एसोसिएशन एंड ऑप्शन डी कोलैबोरेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी shows a semantic relationship between two or more classes. Next question है, the number of instances a class may have is called its dash dash. तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टेम्पलेट क्लास, ऑप्शन बी कंस्ट्रेंट, ऑप्शन सी मल्टीप्लिसिटी एंड ऑप्शन डी विजिबिलिटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मल्टीप्लिसिटी। The number of instances a class may have is called its multiplicity. Next question है, टाइमिंग रिक्वायरमेंट आर कैप्चर्ड बाय यूजिंग dash dash. तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नोट, ऑप्शन बी स्टेरियोटाइप, ऑप्शन सी टैग्ड वैल्यूज एंड ऑप्शन डी कंस्ट्रेंट्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कंस्ट्रेंट्स। टाइमिंग रिक्वायरमेंट्स आर कैप्चर्ड बाय यूजिंग कंस्ट्रेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, dash diagram are used to illustrate data structure and the static snapshot of the instance of the things found in the class diagram. तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूज केस, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी कोलैबोरेशन एंड ऑप्शन डी सीक्वेंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डायग्राम्स आर यूज्ड to illustrate data structure and the static snapshot of the instance of the things found in the class diagram. Please like the video and subscribe the channel Code Learning for more MCQ videos. Next question है, ordinary class with an additional dashed box in the upper right corner of the class is a dash dash. तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्लासिफायर, ऑप्शन बी टेम्पलेट क्लास, ऑप्शन सी कंस्ट्रेंट्स एंड ऑप्शन डी विजिबिलिटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी टेम्पलेट क्लास। ऑर्डिनरी क्लास विद द एडिशनल डैश्ड बॉक्स इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द क्लास इज अ टेम्पलेट क्लास। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द डैश डैश ऑफ द फीचर स्पेसिफाइज वेदर इट कैन बी यूज बाय अदर क्लासिफायर। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्लासिफायर, ऑप्शन बी टेम्पलेट क्लास, ऑप्शन सी कंस्ट्रेंट्स एंड ऑप्शन डी विजिबिलिटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विजिबिलिटी। द विजिबिलिटी ऑफ अ फीचर स्पेसिफाइज वेदर इट कैन बी यूज्ड बाय अदर क्लासिफायर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप जो चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Thank you. Please like the video and subscribe the channel Code Learning for more MCQ videos.